हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं मनोरंजन की दुनिया का हर अपडेट। तो आज मेरे साथ जुड़ गई हैं दो ऐसी खूबसूरत अभिनेत्रियां जो गुरु शिष्य के रिश्ते को एक नया नाम देने जा रही हैं। तो Z5 पे आ रही है मिथ्या, और मिथ्या में है हुमा कुरैशी और साथ में खूबसूरत अवंतिका। तो ये दोनों एक अनोखी कहानी लेकर आ रही हैं। रोहन सिप्पी इनको बनाया है। तो हुमा हर बार आती हैं, सबको सरप्राइज करती हैं। पिछले आई थिंक 2 सालों से हुमा यू आर लाइक सरप्राइजिंग एवरीबॉडी। आई मीन महारानी हो, देन बेल बॉटम हो, एंड नाउ डबल एक्सेल एंड नाउ मिथ्या। सो हुमा, क्या राज है? कैसे घुस जाती हैं आप, पानी की तरह ढल जाती है गिलास में किरदार में? पहले आपको बधाई देना चाहूंगा। आई एम रियली लविंग योर वर्क एंड इट्स रियली यू किल्ड इट इन 2021। सो 2022 बिगिंस विद दिस। सो कितना, हाउ इज द जोश? The जोश is very high, but thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद. Like such sweet words. बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपके काम को, आपके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करते हैं. मेरा मतलब पता नहीं, रीजन तो नहीं पता, बट आई थिंक 2020 ऑनवर्ड्स ना, आई थिंक कहीं ना कहीं एक माइंडसेट शिफ्ट आया है, मुझे लगता है मेरे अंदर. उसके पहले आई थिंक मे बी आई वाज टेकिंग थिंग्स इन लाइफ बहुत इजीली, आज नहीं तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, व्हाटएवर. बट आई थिंक क्योंकि पूरी दुनिया जो इस पैंडेमिक से गुजरी है, आई फील इट आल्सो अफेक्टेड मी पर्सनली. Thankfully, I've not been affected personally. My immediate family members have not been affected immediately. But इतना दुख, दर्द, पेन, पीड़ा देख के ना, सब में I really felt, like questions about what are you doing, what is the purpose of life, if this is the last film I'll ever work on, what do I want this work to say. तो अगली बार जब मैं फिल्म सेट पे गई ना, मतलब तो I was like, the thought in my head was कि अगर this is the last project I do, what do I want people to remember? And उस thought ने मेरे अंदर, I think it didn't create fear, it created josh, it created passion, because I'm like, now I'm going to give it everything. I'm not going to be fearful, I'm not going to stop myself, because मैंने अपने आप को शायद, मतलब बहुत लेजी हूँ मैं, तो बहुत बहुत सारा काम करने से रोका है, बिकॉज आई एम एन ओवर थिंकर कि अच्छा अच्छा ऐसे हो गया, फिर वैसे होगा तो कैसे होगा. आई हैव जस्ट गॉन ऑल आउट कि चलो काम करते हैं, रोज सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं. आई एम लकी, मेरे पास काम है. बहुत लोगों के पास वो सुविधाएं नहीं है. तो आई कैन नॉट take this for granted. I have a responsibility to myself, to my audience, to people. So I'm just, वही जोश है बस. I think that's the reason. Avantika, तुम्हें देखकर, I mean, you're taking the legacy forward. Bhagyashree ma'am is one of my favorite actresses, and you're just taking the legacy forward. And Abhimanyu is also, so I think all in the family. So Abhi, now you have 3 actors. So Abhi, 4 actors. Your father was also an actor. So उनका कितना सपोर्ट था यहाँ पर आने का, और पहला ही आपका ये प्रोजेक्ट है. एंड आई सी द इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट रोल, वो भी हुमा मैम के साथ. यू हैव हुमा मैम के साथ, oh god. I don't think she thought of me ma'am a single day. No. पर नहीं, आपने सही बोला. जो गुरु शिष्य का रोल है, आई थिंक वी बोथ टेकन दैट क्वाइट सीरियसली. पर जो आपके स्कूल में आपकी जो फेवरेट टीचर होती है ना, जिसके साथ आप मस्ती करते हो, जिसको आप सीक्रेट्स बताते हो, आई थिंक शी हैज रियली बीन दैट फॉर मी, and she knows it. In real life, not on camera. In real life. जी, Not on camera, no. So I was very very lucky to have her mentoring me on set and just being there for me. Helped me throughout, been extremely extremely encouraging and supportive. And I think, as you asked, mom या भैया भी इस बात से इतनी खुश थे कि I had such a great bond with her and there was someone to look after me, because उन दोनों को पता है कि पहले सेट पे जाना, जो नर्वसनेस होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, वो बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शंस में जा सकते हैं. तो इट्स ऑलवेज नाइस टू हैव समवन to help pull the strings, pull you back into place and just keep you going. जी. तो वहाँ दार्जिलिंग में शूट हो रहा था. तो दार्जिलिंग बड़ा ही खूबसूरत सा एक जगह है, लेकिन वहां पे मुझे एक प्रॉब्लम, शाम को बहुत जल्दी दिन ढल जाता है. वो पूरा शहर पूरा 6 बजे शांत हो जाता है. पैकअप के बाद फिर अगर चलो मोमोज खाने का दिल करे, तो ऐसा कुछ हुआ, तारे शहर बंद. हाउ वाज एक्सपीरियंस? खाना तो जल्दी खाना पड़ता है, लेट नाइट खाना नहीं मिलता है दार्जिलिंग में. बट मैं पहली बार दार्जिलिंग गई थी, थैंक्स टू मिथ्या. एंड मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था, बिकॉज आई वाज लाइक, ये तो मैजिकल जगह है यार. मतलब वहाँ का खाना, वहाँ का वेदर, वहाँ के लोग, वहाँ की सड़कें, वहाँ के घर, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल. मतलब ऑलमोस्ट लाइक, मतलब एक आपको लगता है कि आप किसी दूसरे टाइम में चले गए. यू लाइक ट्रैवल्ड इन टाइम एंड गॉन ओवर देयर.
और मैं आपको बात बताऊं अमित सर, जिस प्रॉपर्टी पे हम लोग रुके थे, वो इतनी प्यारी जगह थी, वो लिटरली एक पुराना कॉलोनियल गेस्ट हाउस था, एंड वहां पे मतलब मेरे रूम में टीवी भी नहीं था. आई पॉसिबली हैड आई थिंक द बेस्ट रूम इन दैट प्रॉपर्टी, बट उसमें भी टीवी नहीं था. तो हम लोग के पास ना कोई ऑप्शन था नहीं. हम लोग रोज शाम को बैठते थे पैकअप के बाद, बातें करते थे, गाना गाते थे, एक दूसरे की टांग खींचते थे, गेम्स खेलते थे. तो जो माहौल बन गया था ना, दैट वाज जो साथ में वर्कआउट करते थे. So I think with Avantika, me and the bond that we're talking about now, I think we had no option but to get along with each other. And I really think, मतलब हमेशा बोलते हैं कि बहुत मजा आया अपने co-stars के साथ काम करके. But on this project, we all genuinely got together, and we genuinely watched out for each other. तो I used to tease Avantika, देखो तुम, you are very lucky. Your first project you lucked out because I am your co-star. बाद में तुम रोने वाली हो, देखना. ऐसा है क्या अवंतिका? I mean, मजा तो इतना आया है कि बार एकदम हाई सेट हो गया है. जितना जोश था बार, अभी को-स्टार्स और को-एक्टर्स का भी उतना ही हाई हो गया है. तो होपफुली ऐसी बात नहीं हो. Hopefully I can call Huma and say thank you for all the lessons, but I'm having fun here also. No, of course you will have fun everywhere. I'm gonna miss you. So this is my way of saying कि देखना इतना मजा कहीं नहीं आएगा. नहीं, वो तो definitely. हुआ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ना यंग, मतलब द सो कॉल्ड मिलेनियल्स से जो नए आजकल, आई एम द सोशल मीडिया इंटर्न बिकॉज आई हैव लर्न सोशल मीडिया फ्रॉम द यंगस्टर्स. सो आई मीन अब जो वक्त अभी जो इतना तेजी से बदल रहा है, तो जो आजकल के द सो कॉल्ड द यंग जनरेशन, वो सोशल मीडिया खासकर एक सब्जेक्ट है. आई थिंक वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम देम. तो इस अवंतिका या किसी ने सोशल मीडिया आपने कैसे सीखा? आई मीन यू आर आल्सो गुड इन सोशल मीडिया, तो कैसे ये स्किल कैसे डेवलप की जो आजकल इतना इंपॉर्टेंट हो गई है? तुम आई मीन यू आर आल्सो प्रो इन सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट कैसे बनी आप? सोशल मीडिया एक्सपर्ट कैसे बनी मैं? आई थिंक मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हूँ. Your posts are very, I must say your posts are very nice and you put a lot of thought to it. So social media क्योंकि किसी कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, it's like something we learn on the field or something. So क्या लगता है कितना आजकल तो कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है. हमारे टाइम में तो नहीं पढ़ाया जाता था. अब तो क्लासेस भी है ना सोशल मीडिया के. Nowadays so like everything they teach in colleges, including social media, how to be a social media influencer. I think course होने वाला है बहुत जल्द. I think हम सबको करना चाहिए. जी जी जी. रोहन सिप्पी is very mature director जो बहुत कम, his style of taking a project is very different. So as a director, रोहन का vision जो था इस project को लेकर, how was the whole thing with him and how was he as a director? Avantika? Sorry, I thought you were going for. No, Rohan sir, I was super lucky to have him as my first director, because I used to jokingly call him Zen Master on set, because no matter मतलब कितना भी हेक्टिक हो जाए, रेन आ जाए, फॉग आ जाए, हम लोग कोई भी प्रॉब्लम में पड़ जाए, सर हमेशा एकदम शांत थे. He always knew exactly what he's doing and what he wanted, which is so comforting for a newcomer like me, because my energy is all over the place. I'm trying to learn, I'm trying to figure out things, and to have patience with me, to have patience with someone who's so excited, has 20,000 questions to ask about everything, to be supportive and encouraging throughout that whole process. I think I was very lucky to have him as my first director, and also someone who tried to channel that energy in such a great way, where he would let me experiment, let me try things out, which was such a great learning process for me. So yeah, I was super happy and excited to work with him. हुमा, एक बात मैं बोलना चाहूंगा. जब आप, मुझे याद है when you entered the industry, in a very unconventional way, at that time it थोड़ा वो था, but you changed some way, you set up a different bar, and आज देखो conventional is in. So at that time when you started off your career, I mean at उस time पे थोड़ा, लेकिन अब now what road you paved, now everybody is following, and I must say that because I've seen you your growth. So
मतलब अभी स्पेशली द वेब एंड द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने बिल्कुल पुशिंग द एनवेलप्स, अभी सो कॉल्ड वो स्टीरियोटिपिकल कैरेक्टर्स नहीं करता, कोई करना नहीं चाहता, एक्ट्रेसेस, नो एक्ट्रेस वांट टू डू, एंड ओटीटी ने स्पेशली द ग्रे कैरेक्टर्स, अभी हीरोइन को, आई मीन एनी हीरोइन इज रेडी टू टेक एन एक्सपेरिमेंट, समवेयर यू स्टार्टेड इन योर फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म इटसेल्फ, तो ये नया जो ट्रेंड आ गया है, बीइंग ग्रे, बीइंग रियल, I mean, you were the kind of, where you started off this thing. How you look at this trend? Well, I think being grey, being real, तो पता नहीं, but I feel like कहीं ना कहीं हमारी कहानियां बदल गई और कहानियों को देखने का नजरिया बदल गया, and I feel, and as actors, अब इतना कुछ है हमारे पास करने के लिए, because पहले या तो आप हीरो आपको रेस्क्यू करता था या वैम्प होती थी, बहुत ही क्लियर बॉक्सेस थे as to what you would do. But I think somewhere what has happened, especially for women, and I think it's such a good healthy change, कि अच्छे रोल्स लिखे जा रहे हैं, उनको करेक्ट बजट्स मिल रहे हैं, उनकी करेक्ट पोजिशनिंग और पिचिंग हो रही है, और ना केवल इंडिया में, but I think internationally this is happening. So from that perspective, I think it's a very very healthy sign, and I'm happy that, thank you for the compliment, कि मतलब you feel like I've done that from my first film, क्योंकि पहली फिल्म को मैंने चूज नहीं किया था, पहली फिल्म ने मुझे चूज किया था, but I think somewhere a film like Gangs of Wasseypur, it released in 2012, and how it sort of really changed the landscape in a lot of ways. I'm just very fortunate I got to be a small part of that film. But what that experience taught me is that you have to do good films. अच्छी फिल्में आप बनाओगे तो they will travel the distance. अच्छे shows होंगे तो people will watch it. It doesn't matter the platform. It doesn't matter the genre. And I think somewhere, I mean, my effort always is to do excellence. So I always chase excellence. I don't chase numbers or stars, or मुझे लगता है कि यार इस एक्टर के साथ काम कर लेना चाहिए, मेरा थॉट प्रोसेस ऐसे चलता ही नहीं है, मुझे लगता है अच्छा मैं क्या कर रही हूँ, मेरा काम क्या है, am I having fun doing this, and I feel very happy and very proud जब मेरे बाकी फीमेल कॉलीग्स हैं वो अच्छा करते हैं, उनकी फिल्में अच्छा करती हैं, तो I feel कि वो हम सबके लिए रास्ता बना रहे हैं, and I feel, and I'm glad a lot of people think that I've done that for other women. So yeah, I'm just grateful for the opportunities, and I'm grateful that I've worked hard to convert those opportunities. Well, thank you so much, both of you, and I'm sure Mithya will be a lot of fun moments, and आप दोनों की chemistry looks wonderful, and I'm sure the story, the thrills, and the whole thought of the film really entertained. Please, हमारा ट्रेलर आज आ रहा है तो उसे प्लीज चलाइएगा, because जितनी जी, जी. फन और केमिस्ट्री आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पे कुछ और ही है, मतलब हम एक दूसरे के मतलब जानी दुश्मन है. That's the exciting bit, एकदम. This is a student teacher relationship, but actually it's something else. So उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा. Yeah, yes, we'll definitely watch it, and all the best, both of you. Avantika, all the best, and always a rock star.